Okay, so financial market has a different types: capital market, money market, FX market, derivative market, and commodity market. Okay, what is capital market then? Capital market has a two types. Okay, so one is stock market, yeah, and another one is bond debt market, debt, debt market, not debt, 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 yeah, debt market. Capital market has a two types. One which is okay, stock market and bond market. Again, stock market has a two types. One is primary market, and another one is secondary market. Okay, so primary market is for new listed securities. Primary market is for even primary market we call gray market as well. Okay, another name would be gray market, which is not important, but uh, this is like uh, good to know basis. You should know. But the another important aspect of this, so primary market is for newly listed securities or primary market for new securities. Yes, you can. Yes. When the company announce IPO, so that all the IPO proceeding goes through the primary market area. And thus, if you want in a layman language, yes, the new securities will be traded in primary market. Means at the time of listing, all the securities will be traded in primary market, and then after, so that all the securities will be traded in, means all then further part will be taken care in secondary market. So here you can say existing securities will be traded existing securities will be traded existing securities will be traded in secondary market. Then what are those? Very important, because here the IPO which comes under the primary part. IPO which comes under the primary part. So do you know anything about IPO? Full form would be initial public offering. Yes, initial public offering. So in short, IPO, it means why the companies comes through the IPO route. What is the purpose behind this? If company want to raise the fund through public route, then company come up with the initial public offering. Initial public offering. Simple. Make it simple. When the company want to raise
the capital, and the purposes would be if they want to expand the business operation, expansion, development, maybe daily operations, or it could be to repay the debt. Again, to repay the debt. Debt of whom? Maybe to the private equity holders, banks, or other institutions who have offered or provided debt to their particular business. So in that case also, companies come up with public offering. Okay. And another would be if private limited company want to convert their entity into public limited. So that also means in that way also you can explain it. Private limited want to declared as a public limited. In that case also they come through the IPO route. But in short, the purposes are like expansion, development, daily operations, because they are in a need of fund. They want to raise it because most of the time you may expect questions like why the companies will approach to the IPO, right? Just a minute. One call is there from the one of our colleague. 10 बजे है. Okay. So primary market, then gray market, new IPO, initial public offering. If companies want to raise the fund, so they can approach to the IPO and then they can raise the fund. As simple as that. Then what happened in secondary market then? In a secondary market, so all the new listing shares will be traded here. New shares will be traded here. Simple. Are you getting me or not? Any doubt that you have? Yes. So when we discuss about capital market or someone ask if you anything someone ask about the capital market, then you can say a capital market has a two types. One is stock market, another one is debt market. A stock market, it means where the investor come together and they can deal in different securities, right? On a stock exchange platform. Debt market again, so debt market it means if companies or governments if they're looking for any again long-term debt, so they can again invite investors and then they can raise the funds from the investors. Okay, so this would be the definition. हेलो. हाँ बोलो ना. बोलो. है ना. हाँ मैंने पूरे के पूरे यूट्यूब पे भी डाल दिए, अगर आपको वहीं से भी उठा सकते मैं लिंक भेज देता हूँ चाहिए तो. मैं पूरे लिंक्स भेज देता हूँ. अभी मैंने दूसरे भी कुछ अलग अलग इसके बनाए हैं तो वो भी भेज देता हूँ. कई सारे कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए भी. ओके. हम्म. ठीक है. ठीक है चलेगा. अब कल कल करना है फिर या फिर नहीं. ठीक है. नहीं अभी तो मेरा ऑनगोइंग सेशन चल रहा है. तो हाँ. तो कल फ्री टाइम में मुझे पिंग करिए. कोई दिक्कत नहीं. हाँ. टेक्स्ट करिए मुझे. ओके. तो ये बंदा काम का है. ओके. यानी so secondary market, stock market, secondary market. Yes, please. Yeah, we'll first of all write something about the debts. Okay.
So basically here the debt market would be so two parts where you can expect here. One would be for the bonds and debentures, and another would be for oh, 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 another would be for your loans and collateral agreements. Yes, collateral agreements. So the instruments, these are actually instrument names. Okay. So there's two instruments, or there's two little bit subtypes you may expect in the debt market, because there's two instruments where the companies can take the help to raise the fund. Okay, these are like fixed income instruments even. So now you can relate to it. Stock market and bond market. Stock capital market has a two types, which is stock market and the debt market. Stock market, which is basically the companies invite investors to make a deals in their securities or stocks, and the stocks that the securities will be listed on a stock exchange platform like NSE, BSE. Okay, because stock exchange they provide the exchange facility to the investors, because it's a marketplace where investor can come together and they can make a deal in the different securities. And what about then debt market? Debt market again, so debt market is like which is a fixed, even we can call like fixed income, a instrument where companies offer a fixed interest payment to the investors, and then investor can also invest into the bonds and debentures and loans, maybe collateral agreements, and then yes, the companies or governments they can raise the funds through these instruments, and they can mitigate their capital requirement. Okay, so we'll see in details, because see, again, the secondary market, it means here probably primary market would be for a preference equity, because most of the time preference equity trade in primary market, because shares has a two types, right? Or stock has a two types, correct? One is preference shares and another one is common stock. Preference equity and another one is common stock. Preference equity offer on a preference basis with fixed dividend fixed dividend ratio. Yeah, so we are already recording here. We are already recording. Your voice, my will be recorded. You don't need to record anything. I'll record it and I'll send it to you. You don't need to record anything, because I don't know whether it will record from your side or not, because we both have connected our earphones, so it will not allow the recording part. But that's fine. So I'll forward this even sheet to you as well. Okay, that is what we are writing each and everything in details where you can understand very easily. Preference shares and common stock. Preference equity means they offer or they issue on a preference basis. So they will have a voting preference, right? Fixed dividend ratio, voting preference, repayment, repayment of capital preference. They will have these priorities. Repayment of means before the equity capital repayment, so their repayment of capital will be done first. That is what we are saying. Preference equity means preference. We are offering preference to them. And even apart from this features, this preference equities, they carry the different features like redeemable,
redeemable preference shares, because after maturity it will be redeemed, so you will receive a cash consideration, whatever price will be there, so that amount you will receive and the securities will be debited, as simple as that. But even company offer that the securities with the another feature like convertible into common stock, means equity. So these are the popular features that you should know. As simple as that. Up to maturity, there's all the securities will be converted into common stock. Okay, all the securities will be converted into common stock. Okay, so till here, so you are okay, right? You don't have any problem with this. Yes, you can ask, you can raise your doubts, man. Yes, preference on a see preference shares, so they will have a voting, right? They will have everything, but they have a separate preference. They cannot be like common stock, as simple as that. Common stock, they are like real owner of a company. Okay, they're actually real owner of a company. But the preference equity owners are they are like a creditor of a company, right? They are offering the sort of a loan facility to the business, as simple as that. Because the business is, because nobody is interested to offer loan to the business, then they will approach to the private investors, and the private investors will then ask for a preference equity, right? So that is how this preference equity term works. And one more important point, this is like addition to it. So this security will be traded in unlisted market, because this would be like unlisted securities will be traded in unlisted market, right? Where the challenges should be like liquidity, right? Volume, no exchange platform means accurate or I would say legit exchange platform available, like BSE and NSE. Challenges. So now with this, we are done with the primary market part. On your note, there are very short explanation given, but we have discussed in details. We have covered everything. Everything means everything. And which is required. Actually, you may expect questions on these areas. What is the difference between preference equity and common stock? What are the challenges with the preference equity? Right? And now we'll jump on a common stock. There are real owner of the company which carry voting rights, right? Then common stock holders are entitled to get the benefits of all the corporate actions like a stock dividend, cash, and a stock options, cash dividend,
etc. And when we compare with this, here the liquidity would be very high. So against challenges, what would be there? We can say opportunities, liquidity, high liquidity when we compare with the preference equity. Trans Transparent system, then every information is available on the high volume even, okay, volume for a trading. Actually, what happened here with the preference equity is, so it's bit difficult to, sell your securities. So you cannot buy and sell securities easily. This happened actually. So you will have to approach to the broker, then broker actually go into the market and find out some details, and then only, you know, he would be able, or broker would be able to sell that security in the market. And then, means this is how, so this even process takes time. But when we say common stock, which is are easy to process, easy to transfer, easy to transfer, and even easy to buy and sell. Just open the demat account and purchase the securities. Open the demat account and purchase the securities. You can try it. You can open the demat account and you can directly purchase the securities that you want as per your budget. As simple as that, right? 15 minutes. Okay, so here we are done with your stock market part. Any doubt about it? So you can raise at this point of time. Okay, so when we start with the bond, then it will make confuse you. So I don't want that. Any question? So now you're okay with this, right? So yeah, please. Yes, it will take time at least tomorrow that I can send. But this seat I can send immediately to you. Okay, this seat. Okay. Okay. Uh, capital market, stock market, debt market. Yes. Now, see the debt, bonds, and the debentures are quite similar. What is the difference between both? Bonds, again, which is acknowledgement of debt, with the company. Both are like creditors of the company. Why I'm giving a number of this, small phrases to you, so you can explain in such a way, right? Bond means it's a debentures, they're quite similar, acknowledgement of debt with the seal of a company. These are the
Bondholders are the creditors of the company. Okay, so you can tell them in this way. That's fine. Shit. Okay. Then yeah, so bondholders, bonds, when we compare between bonds and debentures, so bondholders are risky. Bonds are risky than the debentures. Why? Because if company may default, in that case, the debentures holders will get the repayment first, then the bondholders, and after that, then bondholder will receive it. There is a sequence. Okay, that this is the small difference would be there between bonds and debentures. But if you want more, you can go there on the internet and you can check the difference between bonds and debentures, and then you can make a note of it. Because sometime there would be, because you may expect questions on this particular area as well. So what is the difference between bonds and debentures? So you can read. Okay. Okay. So bond, on a bonds and debentures. So what the benefits with bonds and debentures then? So they received the fixed interest amount. Okay, they received fixed interest amount. Even fixed or would be flexible, floating, depend. Applies for debentures as well. But yet for a debentures there would be fixed. For a bonds, this is for a bonds. For a debentures would be fixed most probably. Okay. Yeah, go ahead. Floating means flexible. Flexible means, I'll tell you, uh, flexible means linked with the market. When the RBI, Central Bank of India, will change the interest payment, then it will impact on the bond interest payment as well. So, do you know anything about repos, repo rates? When bank decide that on a quarterly basis, you are not aware. No, no problem, no problem. That's fine. Okay. So repos, it means uh, what I would say. I'll try to explain that in a very layman language if you can understand. Do you know RBI, right? Central Bank of India. Yes, Reserve Bank of India, you can call RBI. RBI basically control the money market of India, right? Whenever a bank feels that there is a inflation in the market, so bank can decide the monetary policy. Monetary policy, which means they can increase the interest rate, so which will impact on the loans that we apply or we take a loans from the banks. जैसे कि अ, मैं हिंदी में बात करता हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है. जैसे कि अभी होम लोन चाहिए. होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है कौन डिफाइन करता है? बैंक करती है. बट बैंक करती है तो अभी हर एक बैंक के अलग अलग भी दिखते हैं, करेक्ट? तो कुछ लोन्स जैसे कि आरबीआई एक रेशो डिफाइन करता है जो बैंक को देता है, एंड कुछ बैंक्स अपने कुछ रेशो लगा के मार्केट में वो लोन बेचती है. जो आरबीआई लगाती है
आरबीआई जो रेशो लगाती है लोन का वो अलग होता है, क्योंकि आरबीआई जब इन बैंकों को लोन देती है तो उसके ऊपर आरबीआई अपना रेशो लगवाती है। जैसे कि आरबीआई अगर एचडीएफसी बैंक को लोन दे रही है तो उसके ऊपर आरबीआई कुछ इंटरेस्ट पेमेंट चार्ज करेगा, करेक्ट। सो वो इंटरेस्ट पेमेंट क्या होगा, तुम्हारा रेपो रेट। अगर ये रेपो रेट बढ़ता है तो आरबीआई जो होम लोन देगा मार्केट में उसके भी रेट बढ़ेंगे, करेक्ट। तो उसको रेपो रेट कहते हैं। एंड अगर आरबीआई को जरूरत है पैसे की, अभी जरूरत तो नहीं होती है बट जैसे कि गवर्नमेंट को जरूरत होती है आरबीआई के बिहाफ से, जब आरबीआई फंड रेज करती है तो आरबीआई बैंकों से ही पैसा लेती है ना। जिन बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है तो आरबीआई बोलती है भाई मुझे पैसा दे दो, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट के लिए देना है। तो बैंक्स तो फ्री में तो पैसा नहीं देंगे ना आरबीआई को, क्योंकि कई सारे प्राइवेट बैंक्स है। गवर्नमेंट के बैंक्स को चलो ठीक है, मान भी लेता हूँ गवर्नमेंट बैंक देंगे, बट बाकी के बैंक्स कैसे देंगे यार, नहीं देंगे। तो उसके लिए जब एचडीएफसी बैंक आरबीआई को पैसे ट्रांसफर करेगा तो उसको कहते हैं हम रिवर्स रिवर्स रेपो रेट। समझ में आया फंडा, नहीं आया इतना भी समझ में आया, ठीक है। कोई डिटेल्स में, हाँ इतना ही क्वेश्चंस यू में एक्सपेक्ट इसमें इसके ऊपर भी आएगा, लेकिन इतना ही, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। मैं एक्सप्लेन, हाँ। हम्म। रिवर्स रिवर्स। यस। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट। व्हेन एचडीएफसी बैंक आरबीआई को पैसे देगा तो उसके ऊपर जो आरबीआई मतलब एचडीएफसी जो चार्ज लगाएगा उसको हम रिवर्स रेपो कहते हैं, एंड जब आरबीआई देता है तो उसको हम रेपो रेट कहते हैं। तो ये रेपो रेट, हाँ। हाँ, यस करेक्ट। यस करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, so if this rate changes then the bonds rate also changes, as simple as that. So that is what we call like floating or flexible interest rate, which is linked with the market, this market. If this rate changes, even the bonds interest rate also changes. Now hope you guys are getting this what it means. Am I right? समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो फिर से बताऊंगा मैं। ये रेट जो डिफाइन करता है आरबीआई उसी को ही कहते हैं फ्लोटिंग रेट, जो मार्केट से लिंक्ड होता है। सौरभ समझ में आया, नहीं आया? ओवरलोड हो रहा है, अमूल ओवरलोड हो रहा है तो बताओ मुझे, आई कैन। ठीक है, ठीक है। सो हम सिर्फ इतना बॉन्ड का ही डिस्कस करेंगे, बॉन्ड और डिबेंचर्स, एंड रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ओवरलोड होता है तो मज़ा नहीं आता है मुझे सिखाने में। ये समझ में आया, रेपो का इतना समझ में आया क्या, बताओ मुझे बस इतना ही। जैसे कि हम आरबीआई को पैसा देते हैं तो वो हुआ रेपो रेट, अगर आरबीआई हमें पैसा देती तो वो हुआ रेपो रेट, अगर हम आरबीआई को देते तो हुआ रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स आरबीआई की तरफ जा रहा है, सिंपल। अभी उसके लिए टर्मिनोलॉजी जो जो बनेंगे आप गूगल पे पढ़ सकते हो। क्यों रेपो रेट आया, रिवर्स रेपो क्यों आया, कैसे काम करता है क्या नहीं, तब मैं सिखाऊंगा तो मजा आएगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मुझे तो इंटरेस्ट आता है क्योंकि मैं फाइनेंस का बंदा रहा हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट आता ही है हर चीज़ में पढ़ता हूँ, तो आप भी पढ़िए। ठीक है। They received fixed interest amount, floating and flexible debentures। हुआ, ठीक है। Bond has a different types. So here we will try to cover famous types, okay? Because when the bonds, when the company
announce or offer bonds, so there would be types which is like par value, okay, par, maybe discount and premium. पार डिस्काउंट प्रीमियम, एक एग्जांपल लेता हूं, उसमें सब चीजें समझ में आएगी. पार मीन्स if the face value of a bond is 100 and the market means selling price of a bond is again 100. So this term would be par, correct? Face value of a bond and selling price of a bond. Face value of a bond, फेस वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू 100 रुपए है एंड सेलिंग प्राइस भी 100 रुपए है, तो वो क्या हुआ, फिर पार हुआ. नहीं, एक्चुअल वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू. नो, फेस वैल्यू वुड बी योर एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू. जो मार्केट में ये सेलिंग वैल्यू वुड बी योर मार्केट वैल्यू. हम्म. हम्म. हाँ, just put an example there. If the price of a bond, if the face value of a bond is 100 and the selling price of a bond is 100, so that terminology or that a term we called as a par. Simple. Okay? Put this example there. As simple as that would be easy to understand. Let's say face value of a bond is 100 and the selling price of a bond is 80. So this term would be your discount. Now we are offering discount, correct? Then what would be premium? If the face value of a bond is 100 and we are selling the bond at 110, means we are selling this bond on a premium. जो हमने पार के लिए बोला वही बोलना है, बस डिफरेंस चेंज हो जाएगा प्राइस का. समझ में आया? नहीं आया तो बताओ गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1000 बार बताऊंगा. मैं बताने के लिए कोई ऐसे ये नहीं, चिड़चिड़ नहीं करता हूँ, दिक्कत नहीं है उसकी कोई मुझे. ठीक है, अगर तुम्हें समझना नहीं है तो मैं वही बदल दूंगा ना समझाने का, है ना? तो बताओ. हाँ, अभी ये लेमन लैंग्वेज है बट और भी लग रहा है तो आई कैन, डोंट वरी अबाउट इट. सौरभ, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, या फिर भले ही अपने कॉलेज में सिखा रहेगा तो अब सीखने में, मेरे से सीखने में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? ऐसे तुम्हें कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद कर चुका हूँ ये सब चीजें. ठीक है. हाँ, तो इंस्टीट्यूशन में भी अभी अगर कहीं पे जाते हो ना ट्रेनिंग के लिए, 10 15 20 50 बच्चों में ऐसे लिखा जाएगा, बोर्ड पे दिखाया जाएगा, बताया जाएगा. अभी मैं ज़्यादा इन डिटेल्स में नहीं घुस पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे सामने एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं घुस भी जाऊँ तो उतनी डीप लेवल की चीज़ें आपको कोई पूछेगा नहीं, है ना? तो इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स. उसके साथ साथ ही अपना ये है ना कि मतलब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरव्यू के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही है वो कवर करें हम. बस वही वही टारगेट है हमारा. ठीक है? क्योंकि ये कई सारी और डिटेल चीज़ें बन जाती है, हम काम करते समय अलग अलग तरह की चीज़ें बीच में आती है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस लोगों को भी ट्रेनिंग दे देता हूँ, तो वो अलग है. बट ठीक है. गॉड, ठीक है. सो ये समझ में आया कि बॉन्ड हैज अ डिफरेंट टाइप्स. तो पार, डिस्काउंट, ये फिर होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स भी होता है.
जीरो कूपन का मतलब यही है कि अगर कोई बॉन्ड है जो डिस्काउंट पे इशू होता है, तो उस कूपन एक कूपन ऑफर किया जाता है उसके उसके साथ, उसकी वैल्यू होती है कुछ ना कुछ, उस वैल्यू को हम कूपन कहते हैं। और ये कूपन्स हमें, कूपन्स मतलब इन शॉर्ट ये याद रखना कि इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट, कि जो हमें क्वार्टरली उसके ऊपर मिलता है ना इंटरेस्ट, वही है। स्पेलिंग में थोड़ा सा बेयर करना मुझे, लिख लिख के परेशान हूं मैं बहुत। रिडीमेबल बॉन्ड्स, ये मैच्योरिटी के बाद रिडीम हो जाते हैं, एज सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये प्लेन बॉन्ड है, प्लेन वैनिला कहो उसको। रिडीम मीन्स उसको समय के बाद, 1 साल 2 साल के बाद डायरेक्टली कंपनी बॉन्ड वापस ले लेती है और तुम्हें पैसे दे देती है, जितने भी तुम्हारे पैसे हैं, उसको रिडीम कहते हैं। एंड द लास्ट विच इज इंटरेस्टिंग, कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कन्वर्ट इनटू विच फॉर्म, कॉमन स्टॉक। Up to the maturity, the bonds will be converted into common stock. Bonds will be common stock. Yes, common stock means equity. Actually, equity has a two types. Okay, we are confused in that. Equity has a two types. One is common stock, and another one is preference shares. Preference equity and common equity. Simple. Common for all means public can invest, and preference for only preferential people or investor. Okay. कोई भी चीज में कंफ्यूजन नहीं रखना है हमें, हर चीज को अच्छी तरह से समझना है, उसको पोस्टमार्टम करना है ताकि चीजें समझे। मेरा तो यही वे है ट्रेनिंग का। मैं कई सारे बड़े बड़े लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, एंड लोग समझते भी है, क्योंकि इतनी सारी चीजें मैं सिस्टमैटिक वे से ऑनलाइन बताता, बोर्ड पे लिख के तो नहीं होता है ना। मैंने हर चीज वो सिस्टमैटिक वे से, मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं जो भी है मेरे दिमाग में है, मैं सिस्टमैटिक वे से, मुझे पता है कि किसके बाद क्या बोलना है, क्या चाहिए, वो सब चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। देन डिबेंचर्स के लिए ये तो हुआ, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स यहाँ पे खत्म होता है। तो यहाँ पे भी टाइप्स होते हैं, दो तीन टाइप्स में दिखाई देंगे यही वाले। एक तो रिडीमेबल, कन्वर्टिबल के बारे में आई एम नॉट श्योर, कन्वर्टिबल होता भी है या नहीं होता है डिबेंचर्स के बारे में, बट ये दोनों तो टाइप्स आपको दिखेंगे। एंड क्योंकि ये फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर जाता है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, एज सिंपल एज दैट। तो ये, तो इसके बारे में तुम डिफरेंस दोनों का, अभी क्वेश्चंस, इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस क्या बनेंगे फिर, डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, तो उसके बारे में तुम खुद नोट मेकिंग करना है अब, कि ये बॉन्ड में डिफरेंस क्या है और मुझे डिबेंचर्स में डिफरेंस क्या दिख रहा है। कॉमन स्टॉक का वगैरह ये सब तो मैंने बता दिया, ये सब भी मैंने बता दिया है जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रेस्ट गूगल पे सर्च करके आप कुछ चीज़ें खुद भी ऐड करो, कि जो आपको, जो वर्ड्स आपको इजी लगते हैं, क्योंकि हर एक की ब्लॉग में अलग अलग वर्ड्स होते हैं ना, तो वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बातें? यस नो, या फिर बहुत ज़्यादा हो गया, क्या क्या बता दिया शिवराज ने, एक ही 30 30 मिनट में इतना भर दिया कि मैं हम आउट हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी बनती है आपके, आपको अगर पता नहीं होगा तो आपने कैपिटल मार्केट को ही सब कुछ मान लिया होगा। अब अब लग रहा होगा कि यार इस बंदे ने तो अलग अलग चीज़ें बता दी है, तो नोट्स जो है मैच नहीं हो रही है, क्या कर, है ना। ठीक है, कोई दिक, इतना सब ये पता नहीं था ना, नोट्स में तो था नहीं, तो इसलिए मुझे लोग पैसे देते, ताकि कई सारे कंटेंट है,
मैं उस चीज के लिए बना मतलब हूँ जो तुम्हें कहीं नहीं मिलता है, तो मेरे पास जरूर उसका सोल्यूशन हो जाता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आने वाले समय में तुम बहुत चीजें ऐसे देखोगे कि यार ये बस हो गया यार, मुझे डिस्कस नहीं करना है बोलोगे तुम। कई सारे लोग ऐसे बोल देते कि रुको यार, मुझे थोड़ा सा ब्रेक दे दो कि मैं जाके आता हूँ। क्योंकि टर्म्स थोड़े से नए लगते हैं, बट इंटरेस्टिंग भी है अगर तुम ये अपने लाइफ के साथ जोड़ोगे। हम डेली इस पे करते हैं यार ये सब, जैसे कि कोलैटरल का मतलब है तुमने कुछ ले लिया, उधार पे ले लिया। राइट। अभी उधारी तो कोई देता नहीं, तुमने मुझे बोला कि शिवराज मुझे 10,000 चाहिए। मैंने बोला अभी मैं 10,000 क्यों दूं तुझे, तुमने बोला कि मैं गाड़ी के पेपर्स तुम्हारे पास रख देता हूँ, मुझे 10,000 अब दे दो। अब तुम मुझे कोलैटरल दे रहे हो, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो लोन है, करेक्ट। एंड जो तुम मुझे डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो कोलैटरल है। फिर मैं बोलूंगा 2 महीने बाद अगर तुम मुझे रिटर्न नहीं देते हो तो मैं वो तुम्हारी गाड़ी की पेपर्स किसी और को बेच के मैं पैसे अपने ले लूंगा। तो इसको बोलते हैं कोलैटरल ऑब्लिगेशंस। ये बॉन्ड की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। बॉन्ड्स लोन्स जितने भी एक जैसे ही है नेचर वाइज, कुछ भी फर्क नहीं है। हमें लगता है ऐसे नाम अलग अलग सुनाई देते हैं तो अरे यार क्या हो गया। अभी प्रेफरेंस इक्विटी में और इक्विटी में भी कुछ भी वैसे फर्क नहीं है। बट टेक्निकली लोगों को ये सुनने में अच्छा लगता है कि वो अलग अलग है। अरे क्या क्या डिफरेंस है मुझे बताओ, ये सिर्फ अनलिस्टेड स्पेस में ट्रेड कर रहा है, ये लिस्टेड में कर रहा है। ये थोड़ा सा फिक्स्ड परसेंटेज डिविडेंड मांग रहा है कि वो थोड़ा सा चलो कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ये दे दो, ऐसे बोल रहा है। मेजर क्या डिफरेंस है, फाइनली है तो शेयर्स ही ना। बट इन लोगों ने अरे यार फैंसी नेम निकाल दिया, अब क्या कर सकते बताओ। ये अब मतलब हम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे वर्ड्स आए मार्केट में, तो हम अभी उसको फॉलो करते हैं। हम्म। लोन्स के टाइप में मॉर्गेज आता है, ठीक है, बट एक्चुअली मॉर्गेज को ही कोलैटरल कहते हैं। अभी कोलैटरल में भी इसको कोलैटरल ऑब्लिगेशंस कहोगे तुम, ये सही रहेगा। एंड मॉर्गेज जैसे लोन्स के टाइप होते हैं ना, पर्सनल लोन टाइप है, वैसे मॉर्गेज लोन टाइप है, ऑटो लोन है, ये ऐसे टाइप्स है तो अलग उसमें ही आते हैं। लोन्स की कैटेगरी में लोन्स का जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें आता ही है, बिजनेस लोन हुआ। बट हम यहाँ पे सीखने वाले बिजनेस लोन। ठीक है, तो अब दिमाग पे ज़्यादा जोर मत देना, तो मैं डोज धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तुम्हारा, डोंट वरी। सो ये मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ ताकि